Today we'll be discussing about application of Archimedes principle. देखिए जितने भी एप्लीकेशन है I'll be taking up two questions. So let's take a simple question first. See, body is hanging from a spring balance. There is a spring balance M. Then there is another weighing machine. Weighing machine पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है, जिस कंटेनर को रखा है जिसमें पानी है. Its mass is capital M. Okay. Now in a third situation, there is another weighing machine and a spring balance. ठीक है. और इससे ये ब्लॉक हैंग कर रहा है और सेम लिक्विड में जो सिचुएशन ए और बी वाला लिक्विड, सिचुएशन बी वाला लिक्विड है. दिस इज ए, बी एंड दिस इज सी. सो ए को बी में लाके रख दे रहे हैं. ओके. दिस इज द डायल टू टेल अस द वे. फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस and weighing machine. The volume of solid is V and density of liquid is rho. ये क्वेश्चन है. The thing is कि यहाँ पे इस ब्लॉक पे एक पॉइंट फोर्स लगेगा फ्लूइड के कारण. तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि ब्लॉक भी फ्लूइड पे एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट टू पॉइंट फोर्स. Yes. So reading of weighing machine is mg plus point force. Reading of spring balance mg, small mg minus fb. Tension T, पॉइंट फोर्स mg. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T प्लस fb माइनस mg इज इक्वल टू 0. सो T इज mg माइनस fb. टेंशन में अगर करता है ना स्प्रिंग, हो जाएगा इस पे कैपिटल mg नीचे लग रहा होगा और एक पॉइंट फोर्स नीचे लग रहा होगा. तो mg प्लस fb जो हो जाएगा रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन हो जाएगा. इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो m प्लस mg, fb विल बिकम एन इंटरनल फोर्स. बस एक्सटर्नल जो रह जाएगा m प्लस mg. तो fb को आप लिख दीजिएगा v रो जी. आया समझ में? दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने लिया ताकि आपको समझ में आ सके कि यदि लिक्विड सॉलिड पे पॉइंट फोर्स लगा रहा है तो सॉलिड लिक्विड पे क्या कर रहा होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है. अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर आप कह रहे हैं यहाँ पे. मान लीजिए कि मैं इसे रो और इसे रो W लिख दूं और मैं ऊपर नीचे Vg से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, where V is the volume of a body immersed in liquid या water. कोई दिक्कत ना. तो रो Vg जो ऊपर में है वो क्या बन जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी. यस. और रो WVg क्या बन जाएगा, पॉइंट फोर्स. यस. So I can also write relative density as weight of body divided by point force. या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, weight of body divided by weight of an equal volume of water. Yes. Understood? Yes. So I can also write relative density as weight of body, ठीक है, divided by loss in weight
in water. किसी भी बॉडी का वाटर में क्या लॉस इन वेट होगा वो हो जाएगा. ठीक है, तो वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट इन वाटर, बिकॉज buoyant force is nothing but buoyant force is loss in weight in water, which is called as apparent weight. Yes. Is it clear? Yes, sir. So I can also write weight of body divided by weight of body. When I write weight of body, I mean weight of body in air minus weight of body in water. Right. So all this formula can give me the value of relative density. Yes. इधर तक समझ में आया? Yes. Using this concept, I can find out relative density of any solid body. किसी भी solid body का मैं relative density पता कर सकता हूँ. जैसे कि if I give you a question, ठीक है, क्योंकि अब मैंने ये समझा दिया है तो ये question आपके लिए बहुत ही easy हो जाएगा. A body weighs A in air and its weight in water is B. Find the relative density of the body. This is A over A minus B. ये इसलिए इतना इजी हो गया क्योंकि मैंने आपको सब कुछ ये समझा दिया. Yes. Understood? Yes, sir.